So let me repeat what we did in the last lecture. I hope you are able to see the screen. Uh, we were trying to understand the epsilon delta definition of limits. Limit. In short, we call it as a epsilon delta definition. Okay. For limits. So what we wrote yesterday, suppose you have this situation limit. We are trying to understand it for a single variable, then we'll extend it for a multivariable case. Suppose we have this situation limit x tending to a f of x equals to L. Okay, so we are going to learn this thing through epsilon delta approach. Okay, suppose and how we define this one, we define like this: for every, this is symbol for every epsilon greater than 0, there exists, this is symbol for there exists delta greater than 0 such that mod fx minus L is less than epsilon whenever mod x minus x naught less than delta. Okay, so what I'm saying if for a given epsilon, if we are getting a delta which is also positive and this whole expression is valid, then we'll say the function fx at a has limit L. So let me repeat this thing again. If I try to see it, how geometrically it is possible, if this expression is holding, then how come limit is existing, or we can have the limit. So suppose this is your y-axis and this is your x-axis, x and y. Suppose this line is y equals to fx. Suppose this is the curve y equals to f of x, and this is the point A where we are evaluating the limit, and at top of this point, suppose this value is N. Okay, so now listen carefully what this whole scenario says. It says that let me just redraw this by a different color. This is the point A. All right, this is the point N. Now what this definition says, listen very carefully, otherwise you will miss it again. It says for every epsilon greater than 0. So if I'm choosing any positive real number and if I solve this inequality, so basically what we are getting, if you solve this inequality, so you'll get fx less than L plus epsilon and greater than L minus epsilon. So basically what we are creating, we are by choosing any number of epsilon, we are creating an interval around the value L. And this is how we can write it. This one and this one. This value is epsilon from here to here. And this value is also epsilon.
All right. So what the definition says, for a given epsilon greater than 0, if I'm having a delta, if I try to see the pre-image of this point on y equals to fx, this is going to look like this. And the pre-image of this one, this is going to look like this. So the moment I'm saying for every epsilon greater than 0, I can choose a very close value to L by choosing a very small value of epsilon. So again, if you see, if I try to draw the pre-image, it is going to look like this. So what it says that if I choose any particular epsilon, and according to that epsilon, if I am getting a delta, if I am getting delta, then it means what? If you solve this inequality, this is going to give you x less than x naught plus delta greater than x naught minus delta. So it means what? We are getting an interval which is covering x. Okay. So if I am getting a point, if I'm choosing any value epsilon which is covering L, and every time I'm getting an interval which is covering A. So it means what? Just keep on choosing more precise value for epsilon. What will happen? As long as you will approach to A, what will happen? Your fx will approach to L. Because if I have chosen this finer interval, so this is the value of delta. You choose a different interval, you are getting a more smaller delta. So in this way, what is happening, if this epsilon delta combination exists, so you just try to visualize, just try to go as close as possible to A. And if this epsilon delta combination is existing, it means what? If you imagine to go as near as possible to A, where would fx go? Fx will go to L. This is how this definition works. If you try to elaborate it for two variables, so you can write like this: for every epsilon greater than 0, mod fxy minus L less than epsilon whenever mod x minus x, sorry, the extension of interval is a circle. X minus x naught square plus y minus y naught square less than delta. So this is how you should understand the meaning of this epsilon delta approach. Okay. So now let us see how this definition fails if we choose a non-existence limit. For example, if I take this scenario, suppose limit x tending to 1 to x equal to say 5. This is not possible because this is going to be 2, but suppose it is given 5. So how we can disprove it using the epsilon delta definition? So if you try to geometrically draw it, this is becomes your x-axis, this becomes your y-axis, and suppose this is the line y equals to 2x. Okay, and x equals to 1, this is the point, and then this point would be 2. Okay, and 5 will be somewhere here. Okay, so now what that definition says, you take an interval around L of your choice. If correspondingly you are able to get an interval which is covering the point where you are trying to evaluate the limit, then limit will exist. Now you see, I took an interval around 5, but if I took its pre-images, it is nowhere containing the point A where we are trying to evaluate the limit. So this is not possible, and this is the way we should understand by epsilon delta definition. Now I will take, I had given you an example in the last lecture that if I try to
figure out the limit of this particular function, then how we can do that. Okay. So for evaluating this kind of example, first we need to guess the limit. Once you have the guess of the limit, then we can prove or disprove it using the epsilon delta approach. So suppose we have this example, limit x comma y tending to 0 comma 0 xy square upon x square plus y square. Okay. So what would be the possible limit of this particular example? Let me ask you a few questions. I'll make it conversational this particular lecture. Suppose आपके पास you have given an example whose limit is existing. Okay. And but we do not know that limit. For take the general scenario, limit extending to a fx equals to L, but we do not know what is the value of L. Okay, but we know that the limit is existing. Okay, listen my question carefully. I'm saying I have an example, limit x tending to a fx equals to some unknown value L, which I do not know, but what I know that this limit is existing. So if I know the value of LHL, what would be the value of limit and what would be the value of RHL? Anyone? Just raise your hand. I'll unmute you. What I'm asking, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन के बारे में आपको ये पता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वो लिमिट मुझे नहीं पता है. सपोज उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है. तो what would be its limit and what would be its RHL? Okay, there are many hands. I won't be able to unmute everyone, but let me do it randomly. Gunika, what you have your answer? Gunika, can you hear me? Yes, sir. हाँ बताइए. Sir, RHL will be the same as the limit as the and same equal to LHL. Okay, means अगर वो L unknown है तो that L would be 5 if LHL is 5. This is what you are saying? Yes, sir. Okay, I'm sure all of you other will also have the same answer. So what we'll do, we will take this is a very fine concept, so be careful and try to understand it carefully. So what it means, just now what the example we saw, suppose this is the point A. I am knowing that if I am approaching from left hand side, the limit is 5. And if I know the limit is existing, then definitely RHL would be 5 and ultimately the whole limit would be 5. Okay. So if I'm trying to do the same thing in a two variable scenario, so what would happen? This line will turn out into a plane and this will look like something this. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Okay, so we have the function z equals to xy square upon x square plus y square, and we are looking for the limit at this point 0 0. Okay, the coordinate of this point is what? 0 0 0 in 3D, but if I try to see in a two-dimensional plane, so it is a 0 comma 0. So suppose if I choose a particular direction and that direction is y equals to x. Okay, if I choose a direction y equals to x, so this direction is what? This direction is nothing but one of the RHL or LHL if I try to relate it with the single variable case. So if the limit of this function is existing at xy tending to 0 0 through y equals to x or along y equals to x or
along this direction, then if its entire limit is existing, then it would be what? It would be the same value. Okay. So let me just try to substitute here y equals to x. If you substitute y equals to x, so what will happen? This problem will change into limit x tending to 0, x into x square upon 2x square, which is actually limit x tending to 0, x cube upon 2x square. Square will be cancelled out and it will be 0. So now my question is, what we did, listen carefully, most of the students do confuse here. What I'm saying, just try to relate the previous example which I asked you. If the limit is existing, all right, if the limit is existing and I know that along the direction y equals to x, it is coming out to be 0, what should be the value of this particular thing? Again, I'm repeating, if the limit is existing and we know that this limit is some, say, value L. It's unknown, we do not know, but right now I know that along y equals to x, its value is 0. Then what should be the value of L? You can write in the chat box. 0, 0. Absolutely. Very good. That's excellent. So why it is 0? Because this y equals to x was nothing but one of the LHL or RHL. Because if I try to reach the point 0, 0, we have infinitely many ways. That's why we are not using LHL and RHL concept. But I just tried to create a mapping between our existing concept and what we are going to learn. So from here, it must be very clear to us that if the limit of this function is existing, then it must be 0. So far, we do not know whether it is existing or not, but what we know, if it will exist, it will certainly be 0. So this is a way to guess the limit of two variable function. So from this point, we are very sure if the limit is existing, it is 0. If it is not existing, then that's the another case. So we got that our probable L should be 0. Okay. But it may be a case, we'll discuss some more examples where we will see it may be a case that the limit is existing from one path, but in general it is not existing. Like if I take this example of two variable case, if you go like this and like this, and suppose this is the point A. So at x tending to A, LHL and RHL are existing, but limit is not existing. Okay. So the same thing may happen here as well. Along any path, it may exist, but as a whole limit, it may not exist. But along any path, if it is existing, then entire limit will exist and it will be the same value if it is existing. So this is the way we just figure out how to guess the limit of two variable function. तो अभी हमें यहाँ ये पता चला कि अगर इस फंक्शन की लिमिट 0, 0 पे एग्जिस्ट करेगी तो वो 0 होगी और इट मे नॉट एग्जिस्ट. तो हम अपने एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से अब इसको प्रूफ या डिसप्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ये गेस है वो सही है या नहीं है. तो एफ एक्स वाई यहाँ पे क्या है? fx comma y is nothing but xy square upon x square plus y square. So we'll start with this mod fxy minus L. Put all the values which is known to us. Xy square upon x square plus y square minus 0. And this will be equal to, we can write like this, mod x into mod y square. We can skip the second mod because this quantity is positive. And if you carefully see,
this quantity, this one, this is less than or equal to 1. In case x is 0, it will be 1, or if x is any non-zero value, then it will be less than or equal to 1. So we can carefully write this is less than or equal to mod x into 1. Okay, and or simply we can skip the 1, there is no issue, mod x, and then this is equal to mod x, we can write under root x square. Okay, under root x square. Now if I add some quantity inside this integral, sorry, this square root, then definitely it will be with the less than inequality, and we can write like, and suppose I am adding x square, in x square I'm adding y square. Okay, so you see the whole mod fxy minus L is actually less than under root x square plus y square. Now if I choose this value as a less than epsilon, so everything is following. Mod fxy, if this is less than epsilon, then definitely mod fxy minus L will be less than epsilon. So mod fxy minus L less than epsilon whenever under root x square plus y square is also less than epsilon, means here epsilon equals to delta, both are the same values. Okay, so isn't we achieved that statement which we have narrated many times? Or you can choose any value of epsilon greater than 0, because this value is always going to be a positive quantity. So mod fxy minus L, if you choose any value less than epsilon, it will be true whenever under root x square plus y square is less than delta. So it means what? The definition which we stated just now, it is satisfying for this particular function. So this guess was not only a guess, it was actually the limit of this particular function. So this was the way to evaluate the limit of two variable function. The process is very much straightforward. First, we need to make the guess if it is coming out of the type 0 by 0 as a whole function, and then we can choose certain path to guess the limit. Once the limit is guessed, then we can prove or disprove whether that guess limit is a right limit or not. Students do commit this mistake that they choose a particular path and then they just declare that this is the limit of this function at this step itself only, but that is totally wrong. We'll do examples where we'll see this is actually not going to help us in all the situations. Okay, so let me take another example. If I take limit x comma y tending to 0 comma 0, and the function is say x into y divided by x square plus y square. So again, directly we cannot evaluate it, because if you directly put the value of x and y 0 0 here, so it is going to be an indeterminate form. And don't ever try to think about L'Hospital rule, because L'Hospital is designed for single variable function, not for multivariable function. So let's see what we can do about this particular function. Okay, so if I take a general path, say y equals to mx, okay, y equals to mx, where m belongs to set of real numbers. Okay, and now if I try to evaluate limit, then what will happen? We will get limit x tending to 0, because y equals to mx, so when x will tend to 0, y will also tend to 0. So x tending to 0, and this will become x into mx upon x square plus m square x square. Okay, so if I just take
m and m common and write like this, 1 plus m square into x square cancelled out. Here you should write limit x tending to 0, and then this should be equal to limit x tending to 0 m upon 1 plus m square, which is m upon 1 plus m square. So if I take m equals to 1, this would be how much? 1 upon 2. If I take m equal to 0, this would be how much? 0. If I take m equal to minus 1, this would be how much? Minus 1 upon 2. So if you see, you keep on changing the directions to approaching 0, 0, because basically why we took y equals to mx, because y equals to mx is the family of straight lines which passes through origin. And what is happening, if I am following a certain direction, I am getting a particular limit. If I am changing the direction, I am getting another limit. So it means what? LHL is something else, RHL is something else if you try to connect it with the existing idea. So it means what? It means that this limit is not existing. Okay, so here you should not do like that. Choose path y equals to x, and what you will get x square upon x square plus x square, which is 1 upon 2. So you should not write that 1 upon 2 is the limit of this particular function. And basically, uh, overall, the way we did this calculation, this LHL and RHL concept, the way we related for the multiple directions, this limit does not exist. So here we learn one more thing, that if we have to disprove the existence of the limit, that the limit does not exist, we can use the path test. We can use the path test, and if we are getting the multiple limits, then we can immediately say that limit for this function at this particular point is not existing. But if you choose several paths, and if you got to know that you are getting the same value, then it is a guess that its limit may exist. And then to guarantee it and to prove it, we need to go for the definition of the epsilon delta. Let me do one more example where the limit is existing. Then I'll take queries. Suppose we have this function limit x comma y tending to 0 comma 0, and we have this function. Suppose it is fxy. Okay, and what is fxy? Fxy is a split function, and it is xy into x square, xy into x square minus y square upon x square plus y square when x comma y is not equal to 0 comma 0, and 0 when x comma y is equal to 0 comma 0. All right, so this is the definition of fx. So if I choose a path here y equals to x again, if you choose the path y equals to x again, so what will happen? This limit x comma y tending to 0 comma 0 fxy will be 0, because this x square minus y square will become 0. So this is along y equals to x. Okay, so it doesn't mean that immediately this 0 is the limit of this function. This is just a guess that 0 may be the limit. Now if you have any another path which passes through origin, why origin? Because we are evaluating the limit at 0, 0. So whatever path you should choose, it should pass to the point where we are evaluating the limit. So if you are able to get any another path or direction which passes through origin, and it is giving you a limit other than 0, then immediately you can claim that limit is not existing. But if you do so and you tried few paths and still you are getting the same limit, then that is again
the guess only. You can verify say 100 paths and getting the same limit. It will not guarantee that the limit is that particular value. To ensure and to have the confirmed idea whether the limit is that value in actuality or not, you need to go with the definition of epsilon and delta. So now again let us start with the, so here what we got, we just choose the path y equals to x and we got to know that along y equals to x, this function has the limit 0. So 0 is the guess. Suppose this L may be 0. So start with the again same mod fxy minus L, put all the values. Fxy is xy into x square minus y square upon x square plus y square, x square plus y square minus 0. Okay, and then this will be, we can write like this, mod xy, product of individual mods is equal to the whole mod, there is no issue. And this we can write mod x square minus y square upon mod x square plus y square. This mod we may skip because x square plus y square is a positive quantity. And then this is equal to mod not equal to. Let us use the triangle inequality and we can write less than or equal to mod xy into mod x square plus mod y square divided by mod x square plus y square. You can take square of mod or mod of square, that's same. And then this is equal to this one, not to this one. Okay, mod xy into, we can write like this, mod x square upon mod x square plus y square plus mod y square upon mod x square plus y square. Okay, so if you carefully see, this value is less than 1 and this value is also less than 1. So we can write like this, mod xy into 1 plus 1. Okay, so this is equal to mod 2 mod xy. And now what we can do, we can write like this, 2 times under root x square into under root y square. Okay, and then this is less than 2 times, add y square in the first square root and in the second square root add x square plus y square. So this is equal to 2 times x square plus y square. Now if I choose this value less than epsilon, because this is positive and we are free to choose this epsilon, then what will happen, this mod fxy minus L, this will also be less than epsilon. So the moment you do this, what will happen, mod fx comma y minus L less than epsilon. Okay, but this is less than epsilon when 2 x square plus y square is less than epsilon, the last step. Okay, and this you can solve like this, under root x square plus y square is less than under root epsilon by 2. So this value is nothing but your delta. So you choose any value of epsilon, what you will get, a value delta which will always exist. So you see, the whole mod fxy minus L less than epsilon whenever under root x square plus y square less than delta scenario again exists and follows for this particular case. So this limit L equals to 0, which we have taken as a guess only, it is actually 0. Now I'll take queries.
Yes, Garv. सही का पेज नंबर 23 खोलना. 23. Yes, here you are. सर जब आपने यहाँ पे लास्ट लाइन में जब mod x बाहर निकाला था तो हम वहाँ पे mod y भी बाहर निकाल सकते हैं. सॉरी फिर से. आपने लास्ट लाइन में जब एक्स वाई स्क्वायर में आपने x को मॉडुलस बाहर निकाला था. नहीं, mod x को I wrote under root x square. Now नहीं नहीं सर उससे पहले वाले स्टेप में. उससे पहले वाले स्टेप में, हाँ ठीक है. आपने mod वी x बाहर निकाला था, वहाँ पे mod y भी बाहर आ सकता है. नहीं, आप बाहर निकालने को तो y भी बाहर निकाल सकते हो, देर इज नो इशू. बट आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे कैलकुलेशन का, वो कन्वर्ज भी करनी चाहिए इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. सो दैट्स वाई पर्पसफुली आई टुक आउट मॉड एक्स, नॉट मॉड वाई स्क्वायर. आप मॉड वाई स्क्वायर को भी बाहर निकालोगे, देन दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन विल बी वैलिड. बट आप, द वे आई was able to reduce everything into under root x square plus y square, अगर आप under root y square को बाहर निकालोगे तो शायद आप ना रिड्यूस कर पाओ. ओके सर. नहीं अगर हम केवल अंडर रूट एक y को निकाले मॉडुलस y को तो x y रह जाएगा नहीं वहाँ पे अंदर वाले में. Okay, then you will use what? तब हम दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, उनसे डिवाइड करके एक बन जाएगा x अपॉन y प्लस y अपॉन x. फिर उससे उन दोनों में लिमिट लगा के वे दोनों 1 1 हो गए तो हाफ हो गया. x नहीं, मॉडुलस लिमिट इनटू कैसे लगा लोगे? y अपॉन x या x अपॉन y होगा, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और यहाँ पे लिमिट नहीं है, कहीं पे लिमिट नहीं लिखी हुई है. वी आर रिड्यूसिंग सम फंक्शन, सिंप्लीफाइंग सम फंक्शन, यहाँ पे लिमिट तो नहीं लिखी है. ठीक है. बट वन थिंग इज गुड व्हाट यू डिस्कस्ड. ये जो कंप्यूटेशन है वो यूनिक नहीं है. वन कैन ऑप्ट फॉर इट्स ओन सेट ऑफ ऑपरेशंस टू रिड्यूस mod fx माइनस वाई एल इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, बट यहाँ पे लिमिट नहीं है. ठीक है. ओके सर. और सर हमें रोज अटेंडेंस वहाँ पे जाके लगानी होगी उस वाले साइट पे. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. वैभव. सर ये जो हम प्रूव कर रहे हैं ये फॉर्मल लिमिट्स के साथ, हाँ, तो उसमें एप्सिलॉन को तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना. तो सर ये हमेशा नहीं एनीथिंग स्टैंड व्हिच इज करेगा. पॉजिटिव रियल नंबर. तो ये हमेशा नहीं स्टैंड करेगा सर, ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल नहीं, इज लेस हमेशा देन नहीं एप्सिलॉन. stand करता. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अगर लिमिट वो एल उसकी लिमिट होगी तभी स्टैंड करेगा. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x इक्वल्स टू 5. 5 ये तो सर ट्रू नहीं है. एक अब एक बार इसके लिए दिखा दो अगर सर वो वाला अगर पेज. इसके लिए आप ये स्टेटमेंट वेरीफाई करोगे, ये देखो यहाँ पे ये कर रखा है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x इक्वल्स टू 5. इसके लिए अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को वेरीफाई करोगे तो ये होल्ड नहीं करेगा. ये पिक्चर मैंने राइट साइड में ड्रॉ कर रखी है. पॉइंट जी 1 यहाँ पे है, y एक्सिस पे 2 यहाँ है, 5 यहाँ है. अब 5 के अराउंड आप कोई एक स्मॉल इंटरवल चूज करो. स्मॉल इंटरवल चूज करने का मतलब क्या है? यूपी का वैल्यू एप्सिलॉन, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है उसमें ए पॉइंट कंटेन होना चाहिए. मतलब एक्स टेंडिंग टू ए वाला पॉइंट जो यहाँ पे 1 है, वो कंटेन होना चाहिए. दैट शोज की डेल्टा इज एग्जिस्टिंग. अब देखो 5 के अराउंड मैंने एक फाइन इंटरवल लिया, तो उसकी जो प्री इमेज आई, इट इज वेरी फार फ्रॉम द 1. इवन 1 इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल, बट इट्स वेरी फार. तो यू सी, in this case you are not, for a value of epsilon you are not getting a delta which is covering a. Okay. ओके सर. Isha. So on slide 25, that question we have f of x comma y equals to xy into x square minus y square upon x square plus y square. Yes, sir, this particular question. So in this question, Yeah. if we choose a different path other than y equals to x, then we are getting different value for that function. So we are not getting the same values from both the paths. So can we come So at the what conclusion what that limit was is not? may I know what was your another path? One I wrote y equals to x. What was your another path? So y equals to 3x. Okay, just put y equals to 3x then. So then I'm getting the value as minus 24 by 10.
Are you sure about your calculation? Can you recheck? Yes, sir. Okay, sir, I'll recheck it. Just recheck, because if you use y equals to 3x, still you will get 0. आप एक बार फिर से चेक करना, आप यही सिंपल ये दिख रहा है ना, y इक्वल्स टू 3x आप जैसे ही करोगे Yes, sir. ऊपर Yes, sir. Zero. x Yes, sir. I'm getting it. की पावर ज्यादा हो जाएगी, नीचे x की पावर कम रहेगी। अब जब Yes. x टेंडिंग टू 0 आप करोगे तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, I chose wrong powers. Thank you, sir. ओके। अच्छा सुमित, दिव्यांश, सर स्लाइड नंबर सर 23 पे सर। 23। ओके ये सर हम लोग लिमिट को सर किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, इट्स सेम। जब हमारा वन वेरिएबल का केस था तो डायरेक्शन ही दो थी, आइदर आई कैन कम फ्रॉम राइट और लेफ्ट। बट जैसे ही वो लाइन एक प्लेन में कन्वर्ट हो गई, इट्स लाइक कि आप किसी कमरे में फर्श पे खड़े हो। अब उस जगह पे अगर आपके पास कोई आना चाहे तो इट विल बी इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस एंड इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स टू ज्वाइन यू। सर पर अगर जैसे इसमें आपने लिया था सर y इक्वल्स टू x, सर अगर हम लें सर x इक्वल्स टू k, तो सर क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू k आपका 0 0 से पास नहीं होता है ना। जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, जब LHL और RHL आप करते हैं तो LHL RHL आपको लेके कहाँ जाता है? x एक्सिस पे, उस पॉइंट पे Yes, sir. लेके जाता है ना जहां पे आप लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं। बट अगर x इक्वल्स टू k आप लोगे तो x इक्वल टू k आपको 0 0 पे नहीं ले जाएगा। तो सर इस तो जगह पे x हम y को तो 0 मान रहे हैं ना? y को तो 0 आप मान रहे हो, बट x इक्वल्स टू k लोगे तो x इक्वल्स टू k आपका क्या बनेगा? x इक्वल्स टू k तो ये लाइन बनेगी ना। Yes, sir, तो sir. आप ओरिजिन पे इससे कहां पहुंच पाओगे? इफ यू आर ऑन दिस लाइन, then you cannot reach the origin unless until you come on to y axis and take another path. Yes, sir. Okay, और सर इसमें सर नीचे जो सर समझ में नहीं आया था सर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बाद अंडर एक्चुअली हम चाहते क्या थे कि इसको इस पॉइंट से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमें चेंज करना था, सो दैट वी कैन कनेक्ट द होल एप्सिलॉन डेल्टा सिनेरियो इन अ प्रॉपर फॉर्म। इसके लिए क्या किया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, मैंने अंडर रूट वाई स्क्वायर को जोड़ दिया पर्पसफुली, और यहां से इक्वलिटी को हटा के लेस देन लगा दिया, विच इज टोटली वैलिड। जैसे ही हमने वाई स्क्वायर को जोड़ा तो ये एप्सिलॉन डेल्टा की जो पूरी फॉर्मल डेफिनेशन है उसके फॉर्मेट में आ गया। यस ओके, यस ओके थैंक यू आदित्य, Slide number 25. स्लाइड नंबर 25। हाँ जी बताइए। सर इसमें जो लास्ट थर्ड स्टेप है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने उसको 1 कैसे लिखा? ये आपका मॉड एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मॉड आप हटा भी सकते हो, मॉड से कोई मतलब नहीं, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं। इन जनरल अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा एक से कम होगी, कम या ज्यादा होगी। कम होगी सर। मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। यस सर। तो वही तो यूज किया है, ये वैल्यू भी एक से कम होगी और ये वैल्यू भी एक से कम होगी, इसीलिए 1 + 1 लिख दिया, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू लगा दिया। ओके सर ओके सर ओके सर। सार्थक, सर हमने सर 23 नंबर वाली स्लाइड पे जाना। 23 बताइए। सर मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, हम ये नहीं कह सकते कि 1 के अगल बगल हम कोई डेल्टा लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एप्सिलॉन नहीं है, तभी तो कह सकते हैं कि जो एल है हमारे पास वो नहीं है लिमिट इसकी।
इट एक्चुअली इट्स द सेम थिंग। अगर आप x के करस्पॉन्डिंग आप ये कह रहे हो कि अगर आप डेल्टा वैल्यू को चूज करते हो, ये कह रहे हो ना? यस सर, डेल्टा अगर है हमारे पास और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन नहीं आता है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन नहीं आता है। In general, it won't be true because here what we are reflecting, delta is depending on epsilon. Okay, so नहीं, I will give you examples. आप जो कह रहे हो it may fail और उसकी लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट करे, मतलब एग्जिस्ट ना करे। इट मे गिव यू द आंसर कि आपने डेल्टा लिया, उसमें एप्सिलॉन हमेशा कवर है, और बट इट में फेल। आप एक कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लेके उसका एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करना, फिर ये ट्रू नहीं होगा। तो आप सर डेल्टा लो, डिसकंटिन्यूअस में करोगे तो फिर एप्सिलॉन वाला भी गलत कर देगा फिर तो वो, अगर हम एप्सिलॉन से लेके जाएंगे तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा नहीं मिलेगा फिर। नहीं नहीं, इसीलिए तो हम एप्सिलॉन को चूज करके डेल्टा को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लोगे, उसमें डेल्टा एक चूज करोगे, तो हो सकता है आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, ठीक है, जिसमें कि वो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो बट एज एन इंटरवल वो पॉइंट कंटेन करता हो। तो सर उसके वाइस वर्सा भी तो वही रिजल्ट आएगा ना लेकिन। नहीं नहीं, जैसे ये एग्जांपल लिख रखा है ना, ये वाला, अगर यहाँ पे ऐसे आप लेते हो तो आप देखो क्या मिलेगा। अगर एक पूरी प्री इमेज देखो तो इसमें दोनों पॉइंट कंटेन हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी कंटेन हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी कंटेन हो रहा है। तो आपके हिसाब से तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बट इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि LHL इसकी कुछ है, RHL कुछ है। ठीक है, डिड यू गेट? तो सर फिर इसको एप्सिलॉन से करेंगे तब? आप साइलेंस से करोगे तो पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा ना कि 2 इसकी लिमिट है या 5 है। मतलब जैसे मैं फिर से बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, से ये आप लेते हो यहां से और यहां से। अगर आप अब साइलेंस जब पहले फिक्स करोगे तो आप पहले डिक्लेयर करोगे ना कि ये इसकी लिमिट है या ये इसकी लिमिट है, देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। बट अगर आपने डेल्टा को पिक चूज करके ऐसे किया तो फिर तो हो सकता है दोनों ही कवर हो जाए, तो आप क्या कहोगे क्या लिमिट है इसकी। बट अगर आप साइलेंट को आप चूज करोगे तो पहले ये पॉइंट आप फिक्स करोगे ना कि इसकी लिमिट है या नहीं है। ठीक है सर। इसीलिए हम पहले एल का गेस करते हैं। ठीक है, ओके सर। महावीर। सर ये एप्सिलॉन निकालने का यही तरीका है क्या सर? हाँ जी, अब साले निकालने का यही तरीका है। आई एम सो सॉरी सर ये इसके इक्वल कैसे आया डेल्टा के? इसमें आप इस डेफिनेशन को देखो ना, इसमें हमने दिखा क्या दिया, इसमें ये दिखा दिया कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर आप जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है उससे मैच करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों ही जगह एप्सिलॉन आ रहा है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। आपका जो डेल्टा आएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस इज काइंड ऑफ थंब रूल, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो डेल्टा आएगा वो एप्सिलॉन का फंक्शन ही आएगा, तभी तो हर एक एप्सिलॉन पे एक डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। ओके, ठीक है सर। मनप्रीत। 25th पेज नंबर 25। हाँ बताइए। सर ये एक्स वाई मॉड इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे वाला स्टेप बताना। आई जस्ट यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि मॉड ए माइनस बी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए यस की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह वाई स्क्वायर है। ठीक है, उसको यूज कर ओके लिया तो सर। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दीज स्टेप्स आर नॉट यूनिक स्टेप्स, आप दूसरी भी कोई कैलकुलेशन फॉलो कर सकते हो
and if you do it right, you will get the same conclusion. Rashmi Kumari. तो वो x square plus y square less than epsilon कैसे आया? या फिर हमने वो ये हमने चूज किया ना, दिस वी चूज, क्योंकि व्हाट डेफिनेशन सेज, डेफिनेशन क्या कहती है कि mod fxy minus l लेस देन एप्सिलॉन. ओके, ये एप्सिलॉन से कम है व्हेनेवर दिस इज लेस देन डेल्टा. तो इसलिए किसी एक इनइक्वालिटी को तो हमें लेके चलना पड़ेगा और दूसरे को प्रूफ करना पड़ेगा. तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक मिनट, what we can do, let me reshare. What we can do कि ये पूरी कैलकुलेशन हमने की. अब यहां पे क्या आ गया, ये लेस देन एप्सिलॉन. आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो. लिसन केयरफुली, आप इस पॉइंट को पकड़ो और इधर जाते हुए चले जाओ. ओके, एंड यू विल रीच mod fxy minus l. अब mod किसी और mod fxy minus l तो लेस देन एप्सिलॉन आपको गिवन ही है. You will get the same conclusion. Okay, क्योंकि एक इनइक्वालिटी उसमें से कोई ना कोई तो आपको गिवन है. From where we got to know that it is less than epsilon. Okay. Ranjan. Ranjan, am I audible? Sir, 25th slide. 25th. हाँ जी बताइए. इसमें mod x को आपने root x square plus y square कैसे लिखा है? mod x को ये mod x की डेफिनेशन ही होती है बेटा. mod x होता ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर है. नहीं सर, mod x को हमने जहाँ पे सेकंड स्टेप है उसमें जो जहाँ पे mod x होल स्क्वायर प्लस mod y होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का mod है, उसके बाद हमने 1 + 1 लिख दिया. अच्छा, ये mod x स्क्वायर को mod x स्क्वायर कैसे लिख लिया? Are you there? डिवाइड होके 1 कैसे? ये डिवाइड होके 1 नहीं हुआ. आप यहां देखो इनइक्वालिटी लगी हुई है. I have used that x square plus y square, x square upon x square plus y square, इसकी वैल्यू 1 से बराबर या 1 से कम होगी, इसको यूज किया है. ये इक्वल टू थोड़ी है, इसके आगे देखो इनइक्वालिटी लगी है. ओके, नमिता. समझ गया सर, समझ गया. अमृतदीप. सर जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे इसमें हमने सर नीचे लिखा एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है एप्सिलॉन का जिसकी किसी पॉइंट पर लिमिट ना एग्जिस्ट करे. नहीं, at most you will get a value of delta which may be a function of epsilon. Yes sir. क्योंकि जब हम ये mod, listen to me, mod fxy minus l जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अब कहीं लिमिट की बात नहीं आती है. We are just reducing some function into a simpler function. ओके, यहाँ पे कहीं लिमिट तो लिखा नहीं मैंने, तो लिमिट की बात नहीं करेंगे. लिमिट तो पहले ही हमने डिक्लेयर कर दी कि अगर है तो जीरो होगी, और उसी चीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जीरो है या नहीं है यूजिंग दैट डेफिनेशन. तो पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन का फंक्शन है और वो जो फंक्शन है उसकी लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे. आप निकाल के दिखाइए. बट इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन. ये जितने भी एग्जांपल हम कर रहे हैं ये एप्सिलॉन की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है. आप ऐसा नहीं कह सकते आपने कि एप्सिलॉन चूज किया उसके लिए ट्रू है, बट सपोज एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 के लिए वो ट्रू हो गया, आपको एक डेल्टा मिल गया, और मैंने एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 दिया तो उसके लिए नहीं ट्रू है, डेल्टा नहीं मिला. तो ये दिस इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन. ओके,
भावना? सर हमने यहाँ पे जो सेकंड स्टेप किया है मोड एक्स स्क्वायर प्लस मोड वाई स्क्वायर, तो हमने दूसरे उसके बाद वाले स्टेप में लिखा है एक्स स्क्वायर का मोड। सर हमने ऐसा क्यों लिखा? एक्स स्क्वायर का मोड लिखो ना लिखो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना। आप लिख सकते थे, मतलब कि आई जस्ट रोट इट, बोथ आर सेम नंबर्स। मॉड एक्स होल ठीक है स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ आर द सेम नंबर्स। ठीक है सर, ओके सर। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। Excuse me, sir. बताइए रंजन। Sir,